Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. We are learning standard 11th economics, and today we are going to start with our new chapter, that is chapter 7, Indian economy. So, we have completed 1 to 6 chapters. So, in 1 to 6 chapters, we have studied the term economics, we have studied the different basic terminologies, then after demand, supply, cost of production, and concept of revenue, and lastly, the markets. Now, today this chapter is totally different from it. We are talking about the India. We are going to talk about the Indian economy, how it was been and how it is in. तो ये पहले कैसे था अभी कैसा है ये पूरा डिस्कस करेंगे हम ये चैप्टर के अंदर. सो हियर एवरी पॉइंट एवरी डिटेल पॉइंट इज बीन गिवन अप हियर एंड ब्रीफ, not in detail but in brief it has been given to you, so you have a better idea about our country, that is India. So let's start with this Indian economy. तो first lecture will talk about the introduction, how India was about and वो कैसे था, क्यों बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे आए. Then after we are going to start a new topic, that is Indian economy before independence. भाई before independence हमारा इंडिया कैसा था, after independence कैसा है, वो पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. यू आर नॉट हैविंग एंशियंट इंडिया, ओके. एंशियंट इंडिया टॉपिक इज नॉट देयर फॉर यू, सो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न दैट एंशियंट इंडिया बिकॉज वो आगे जाते हुए ट्वेल्थ में भी कोई काम नहीं लगने वाला. एंड ऑलरेडी इट हैज़ बीन स्टडीड, वो आपको आ चुका है एसएस के अंदर. So we are not going to discuss about the ancient India. You are going to directly start with the introduction and then after the Indian economy before independence. So very first introduction sees. तो पहली बात करें अगर इंट्रोडक्शन में हमारे इंडिया के बारे में, सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर हम बात करें बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा और उन लोगों को पॉपुलेशन के साथ देर इज़ नो एनफोर्समेंट टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और क्रीड्स. हम यहाँ पे फ्रीली रह सकते हैं. वी हैव डाइवर्सिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, कास्ट, क्रीड्स, ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड एवरीथिंग. तो ये सब मिला के हमारा एक बड़ा सा देश बनता है, दैट इज कॉल्ड इंडिया. एंड इट इज़ विथ वेरी डिफरेंट रिलीजन पीपल्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कास्ट वाले रहते हैं, डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस ज़्यादा दिखते हैं. सो इट इज़ वेरी रिच इन कल्चर. Our country is very rich in culture. So there is a diversity which we find in different languages, caste, creed, okay, religious. So ये सब चीज़. So we have a unique identity in the world and we find that it is the largest with the different culture in the world. Okay, लार्जेस्ट इन द डिफरेंट कल्चर. रैंकिंग की बात नहीं करा, पॉपुलेशन की बात नहीं करा, लेकिन हम बात करें कि इसमें कहाँ हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ है. तो ये सब चीज़ के साथ हमारा इंडिया बना है. अगर एंशियंट की बात करें, पहले के टाइम बात करें, तो इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा? इट इज़ बिकॉज ऑफ द किंग दुष्यंत एंड क्वीन शकुंतला. तो दुष्यंत एंड शकुंतला का जो पुत्र था दैट इज़ भारत, और उसके नाम पे हमारा इंडिया का नाम, हिंदू का नाम बन गया भारत. सो वी फाइंड दैट हिंदुस्तान का नाम बन गया भारत बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर. सो वी हैव सीन दिस रामायण. तो उसके अंदर हमने पूरा चीज़ देखा ही है और उसके ऊपर ही वॉज द मेन पर्सन वॉज हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर होल नेशन दैट टाइम. नाउ अगेन what was making India as a very prosperous? We have different scopes, we have different fields in agriculture, traditional crafts. We are making different export from our country to different countries. So ये सब वजह से हम देखते हैं कि देर इज़ सो मच अट्रैक्शन ऑफ फॉरेनर्स टूवर्ड्स आवर कंट्री. सो फॉरेनर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स आवर कंट्री बिकॉज ऑफ दिस very rich in the agriculture, trade and handicraft products, as well as we are very much good in trading also. So ये तीन चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स आए. तो वी कैन से दैट अर्लियर टाइम व्हेन इंडिया वाज वेरी प्रॉस्परस एंड उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है. उसके बाद बहुत सारी एग्रीकल्चर, बहुत सारे मुगल्स आए. सो यू फाइंड दैट टाइम किंगडमशिप चल रहा था. उसके बाद मुगल्स आए, मुगल्स के बाद डच, फ्रेंच, बहुत सारे अलग अलग वी कैन से यूरोपियंस आए, एंड लास्टली द ब्रिटिशर्स के. सो वी फाइंड फ्रॉम 1526 to 1858 in this era we find that is the centuries from 16th to 19th era we find मुगल्स ने हमारे ऊपर राज किया. एंड देन आफ्टर मुगल्स अकेले नहीं थे, उन लोग के साथ, उन लोग के बाद फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए,
डच आए, तो ये सब लोग जो यूरोपियंस थे वो लोग ने हमारे ऊपर राज किया. एंड लास्टली आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल, बट लास्टली वी फाइंड दैट Britishers came in India and they started ruling. So we find that in from 1757 to 1947, Britishers ruled. That is altogether 190 years. They have ruled India and they have made our people slave under them and working under them. Apart from it, we find that कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज देर वॉज एन ईस्ट इंडिया कंपनी हु फर्स्ट केम फॉर ट्रेडिंग पर्पस एंड उन लोग ने हमारे ऊपर वी कैन से राजकरण कर दिया. दैट इज फ्रॉम 1757 टू 1858, 101 ईयर तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी. एंड उसके बाद वी फाइंड दैट in 1940s till 1947 Britishers were there, and after the midnight of 14 August 1947 we find that British government finally left India and India अकेला इंडिपेंडेंस बाद में हो गया. लेकिन हम टुडे ये टॉपिक, ये तो इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर हमको ये थोड़ी बहुत चीज़ें हमको पता है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द सोशल साइंस नाउ, बट सम ऑफ थिंग्स विच वी डोंट नो वी आर गोइंग टू लर्न दैट बिफोर इंडिपेंडेंस ईस्ट इंडिया कंपनी और वी कैन से ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ बनाई, क्या क्या चीज़ तोड़ी, क्या क्या चीज़ किया हमारे यहाँ पे. सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट इंडिया वॉज वेरी वेल्दी, रिच स्क्रप्चर्स, कोहेसिव social setup. Cohesive matlab togetherness, unity was there between the Indians, between the people of the Indians. So we find that people were so much interactive, socially interactive to each other. They have no much मतलब कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी सर. सभी रिलीजन ट्रेडिशन को वो लोग रिस्पेक्ट देते थे, करने देते थे. एवरीथिंग वॉज बीन गोइंग ऑन वेरी वेल. एंड देन आफ्टर दिस पर्टिकुलर कल्चर वॉज बीन attracting the foreigners and foreigners आए and उन लोग ने हमारे ऊपर राज किया. सो वी फाइंड दैट अगेन इट इज़ नॉट ओनली द कल्चर बट वी फाइंड दैट कल्चर ट्रेडिशन के अलावा वी आर वेरी मच गुड इन ट्रेड. सो ट्रेड कौन सी चीज़ करते थे हम? कॉटन करते थे. मुस्लिन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्लॉथ दैट इज ऑफ लेनिन. देन आफ्टर इंडिगो दैट इज अ डाई. देन आफ्टर स्पाइसेस we are very much good with spices. मेटलर्जी लाइक वी कैन से मेटल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब चीज़ें हम यहाँ ज़्यादातर ट्रेड करते थे. ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ के यहाँ पे. सो वी आर वेरी मच गुड इन द ट्रेडिंग पर्पस ऑल्सो. एंड वहाँ पे ये सब चीज़ों की वजह से कि इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें हैं, कॉटन है, इंडिगो है, स्पाइसेस है, मेटल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं. उनका कल्चर भी अच्छा है. they are very good of nature. Everything attracted the foreigners, and then after we find that they came in the sense this Mughals came, and then after the Dutch, Portuguese, and everyone came and started ruling. And finally it was the Britishers who ruled us, and then after we became independent. So we find that Britishers who dominated, who ruled us 190 years, फर्स्ट केम विद द ट्रेडिंग पर्पसेस. ट्रेडिंग पर्पस के यहाँ से आए थे, बाद में उन लोग ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया. एंड देन आफ्टर दे हैव रूल्ड अस टिल 190 ईयर्स. सो इसके वजह से दे हैव एक्सप्लोटेड आवर richness in different types of crops, richness in different types of knowledges, sculptures, everything. तो वो पूरा बर्बाद कर दिया. सो देन आफ्टर वी फाइंड दैट आवर पीपल वर बीन ट्रीटेड एज स्लेव एंड पॉवर्टी इंक्रीजेस. तो यहाँ पे ये सिचुएशन, ये इन लोग की वजह से ये पूरा चीज़ होता था. नाउ द मेन टॉपिक दैट इज इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस इज वी फाइंड दैट वी आर गोइंग टू नो अबाउट हाउ रेलवे केम, हाउ रोडवेज केम. तो ये बहुत सारे टॉपिक्स है जो अलग अलग हम सेगमेंट में पढ़ेंगे. रेलवेज है, रोडवेज है, बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ बैंक स्टार्टेड, when did the first bank started, everything. Then after, so what was the social culture of India and how British reacted towards it, what was the agriculture sector. Then after, how was the land revenue collection system, कि भाई हम वो लोग land revenue कैसे collect करते. Some of the topics you have already studied in the history, but still we are going to know as a economic point of, इकोनॉमिक के बेसिस के ऊपर हम ये पूरा चीज़ लर्न करने वाला है. where high rate of taxes are there, high rate of excise and custom duties are there. You find that what was the industrial policy that time under the British rule, how exploitation was being done economically as well as to the artisans. Lastly the investment pattern and the payment burden. So ये पूरा 13 टॉपिक्स मिलके ये पूरा पॉइंट बनता है, that is Indian economy before independence, which we are going to know
but not today, in tomorrow. In next lecture we are going to learn in detail about the few points. I'm dividing this particular 13 points into 3 parts or 4 parts, which will help you to learn segment by segment in detail. Okay, so today just remember that how we India was there, and how different people came, and how was the Indian economy. Next class we are going to learn in detail how roadways, railways, banks, social structure and agriculture was been there in that time under the Britishers rule. Thank you.